Good evening. This side Rahul Magan here as Group Chief Executive Officer Treasury Consulting. Today I'm going to be speaking about a very important topic which is happening in the world of financial market. But unfortunately we are hardly bothered about this topic. We knew that what is happening with the neighboring countries. So example, if we speak about three countries who are in Asia, number one is definitely the Sri Lanka. Number two, Pakistan, and number three is the Nepal. When I speak about Pakistan, please do not take India-Pakistan politics into consideration. Strictly restrict yourself to financial markets. I repeat, do not take any form of politics into consideration. So guys, what is happening is that when we speak about Sri Lanka is in a huge mess. Rather, according to the public information, that they need urgent funding of not less than 3 billion US dollars. 3 billion US dollars. And according to the public information, around 25% of the debt of Sri Lanka is financed by China. The whole information regarding this is in the public domain. But the hard fact is that we hardly bother about these statistics until these statistics came so close that we bound to lose. Now, when we speak about Pakistan, the situation is more severe than what we envisaged. I again repeat, we should not enter into a discussion whether Imran Khan outstate was the right one or whether it was the wrong one. That is politics, let it be. But Pakistan, as we speak, is standing at a debt level which is beyond imagination. Beyond imagination. Like if we speak that $1 is 296 Sri Lankan rupee. 296 Sri Lankan rupee. While for Pakistan, $1 is near about 182 Pakistani rupee. Which precisely means that situation is messing. Now today we got another information, and that information is again a shocking one. Now that information is that Nepali government, which means the government of Republic of Nepal, they fired their central governor. And why did they fire their central governor? Because the FX reserves of central or basically the Republic of Nepal is less than $10 billion. You knew that as we speak in 2022, when Russia already invaded Ukraine and Russia is losing. In that regards, having a FX reserve of 10 billion is nothing for Nepal. Nothing for Nepal. It is like a penny, Now, very important thing is that the debt level of countries are going up, and one by one the defaults started. So we have an example of Sri Lanka, we have an example of Pakistan, now we have an example of Nepal. Even the countries like Singapore are staring at a debt to GDP level of near about 140%. You heard me right, 140%, which precisely means that if Singapore having a GDP of $1, their debt is 40% more. Guys, in India also, the debt to GDP ratio is approaching near 200%. According to the statistics, I repeat, according to the statistics available in the public domain, India debt to GDP ratio was near about 50% in before 2014.
I repeat, when I speak about 2014, one should not enter into any form of politics. Politics is separate. We are here about the financial market. So repeat this. That is very important thing, because the biggest problem in India is that if you start speaking about the financial market, people start indulging you in a politics. So before 2014, the debt to GDP ratio was near about 50%. But according to the statistics provided by International Monetary Fund, which are well available on the Google, but unfortunately we do not have time to study, these statistics. We are too busy in watching the paid media. According to these statistics, the debt to GDP ratio of India is approaching 100%. And I'm sure that every budget, people focus on tax, their tax benefits, and all in all. But the Indian government is raising a huge amount of money, a huge amount of money. And by the way, this money needs to be repaid. But unfortunately, we are hardly bothered. Keeping this, I would like to summarize my discussion, and that is that the debt level of the countries are ballooning up, and now they have started blew up also. Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Egypt, Mauritius, Maldives, Malaysia, Singapore, Japan, China. The examples are coming almost every day in the public domain. But unfortunately, we are very busy people, because we hardly bother about these statistics. And I'm telling you that very soon a big bust is on the cards. So today onwards, I restarted my Facebook Connects, but these Facebook Connects would happen only in the night, not in the morning time, because I do not have time in the morning. Thank you very much. This is Rahul Magan from Treasury Consulting Group. Now I will see you very often on the Facebook Connects. You know my personal number, which is +91 9899242978. But before I wind up, I have something to say, which is Treasury Consulting hardly bothers about the feedback. We hardly bother about the feedback. For us, the likes, the dislikes, the comments, the views, the subscribers, all these are immaterial, because we speak facts on the financial market. We do not belong to any political party. We are not from any political party as far as the India is concerned, as far as the Singapore is concerned. We strictly restricted ourselves to the financial market. That is what it is. More extensive information on the cards. This is Rahul Magan from Treasury Consulting Group. Have a great time ahead. Thank you.
Good evening. This is Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. In today's Facebook Connect, I would be talking something important pertaining to United States. Now, as we understand that the world economy is facing a war, which is nothing but the US-Ukraine war. There are other geopolitical tensions going between Russia, Taiwan, probably North Korea, United States, and many other countries of the globe. But having said that, the attraction is US and Ukraine. But before this war, the world had COVID. In fact, even today, as we speak, the world is having COVID. The new variants are coming, new variants are emerging up, and so on and so forth. Now, the inflation is rising up worldwide. Now, this inflation is not rising because of the, I would say, the salary inflation, basically the wage inflation. Wage inflation in the sense like when companies trying to pay exorbitantly to retain the talent. So this is not the wage inflation. Let it be very honest. This is a supply restricted inflation, which means that due to Corona and now because of Russia and Ukraine, the supply is constrained. Now this is pushing up the inflation. Now, since it is pushing up the inflation, the central banks across the globe are trying to tame it via the rate hike. As we speak, Federal Reserve already done with a 25 basis point hike. European Central Bank also done with 25 basis point hike. Central Bank of Korea and many other central banks are done with their respective hike. But the end result is not yet achieved. And this is what I'm warning people on my YouTube channel, and now we already started the Facebook Connects. I am warning on the Facebook also. You will not be able to achieve this by hiking the rate, because the small and medium term economy or the small and medium term enterprises are in a very bad shape, and thanks to Corona and the war. So expecting your rate hike would be able to bring inflation down is a big mistake. Now, a very important point which I would like to discuss from the Indian, I would say, from the India monetary policy angle. Few days ago, we had a policy meeting, MPC, Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India. The Einsteins, Edisons and the Newtons came in public domain and said that, India would be hiking the rate. But I am persistently saying one thing, that India is not in a position to hike the rate. The reason is pretty clear. And the reason is that the debt level of Indian government is rising. And it is rising at a very fastest pace. Now that's an unfortunate fact that the paid, sold and corrupt media of India is not reflecting that. Every budget we focus on tax or the tax benefit. But unfortunately where we never focus is, I would say the gross and the net borrowing of the government of India, which by the way is going up exorbitantly. So both gross and net borrowing is going up exorbitantly. Now when the gross and net borrowing is going up, of course the interest cost would go up. There is hardly any doubt. Now when the interest cost go up, it means that the government either need to print more money, that's more important, or the government need to borrow more. From the last 6 months, as far as the data is concerned, and I doubt the data, India is witnessing double-digit inflation,
which is WPI. WPI means Wholesale Price Index. WPI is nothing but the 303 of 2022. Now, which means that when the whole world is on AK-47 or the advanced assault weapons, the WPI is nothing but the 303. But still India is computing inflation on WPI. Hardly any media channel talks about CPI. And CPI linked bonds failed drastically. That is another good thing which we never wanted to discuss. Anyways, now as inflation is shaping up in India, we will see that the saving structure of India will collapse, which means that the money which you are saving will come down drastically because the real interest rates are already negative in India. And that's a fact. Because today the inflation is near about 13% to 14% as per official statistics. In reality, it is more than 20%. In some cases, it is more than 30%. But officially speaking, it is 13 to 14%. The saving structure of the country would collapse. And when the saving structure would collapse, it would have a deep and denting impact on the stock markets. That I am warning you right now. Like I warned people in 2008 about venture capitalists and the private equity fund. I warned people on multiple aspects at a multiple point of time. And now I am warning you that probably in another few years from now, the saving structure would collapse. Because whether it is petroleum prices, whether this is diesel prices, whether this is gas prices, whether this is metal prices, now whether this is any other thing, the pricing is going up. Now, when the pricing is going up, it would have deep and detrimental impact on the saving structure. Government of India is relentless as far as the borrowing program is concerned, because every year you are borrowing a huge amount of money. And when you borrow a huge amount of money, remember you need to pay. To conclude my story with a live example that today Sri Lanka defaulted on a whole 51 billion. I repeat, on a whole 51 billion of debt. Now, this includes near about 25% debt of China and rest of international agencies. So, the MBA professionals who were taught a concept called sovereign debt. Now, sovereign debt means it cannot default as it is guaranteed by a country. This concept is foolish now, because whether this is Sri Lanka, now Pakistan is facing around 43 trillion Pakistani rupee of debt, and you know what is happening with Nepal. So these concepts are foolish now. Very soon the world will see a major debt collapse, and I don't think that any country would get spared. The reason being, the whole, like as we speak, the world having around 229 trillion worth of the debt. 229 trillion worth of debt. I am warning you right now that the debt level of India is rising. When I speak about the debt level, I mean to say government and corporate. I'm not naming any specific corporate, but the corporate I am talking it about, rather the corporates I am talking it about, these corporates accumulated a huge amount of debt. That's a separate thing, that in the countries like India, the stock price would always go up because people are foolish enough not to understand that. But history is witness that everything, specifically talking debt, when it would go up, it has to come down, which means the corporate will default. Infrastructure leasing and financial services, Diwan housing, Yes Bank. There are numerous examples. I'm never short of examples which we hold when we saw boom. All of a sudden, boom. Debt level is rising. The paid, sold, and corrupt media is completely ignoring that. We do not knew this about.
Media will never talk about this. Rest you all know. Like I promised, the Facebook Connect started, but always in the night because of the time restriction. This is Rahul Magan from Treasury Consulting Group. You knew my number 9899242978. I repeat 9899242978. Have a great time ahead. Good evening, friends. This side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. आज का फेसबुक लाइव हिंदी में। आज हम अगले 10 मिनट में बात करेंगे भारत की एक महान कंपनी जिसका नाम है भारत पे। आई होप आप लोग भारत पे के बारे में रेगुलर अपडेट होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपडेशन का मतलब होता है मीडिया, और मीडिया कभी हमें अपडेट करता नहीं। तो भारत पे ने इस साल फाइनेंशियल ईयर 21 में अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए, और भारत की चोर मीडिया, मैं चोर मीडिया इसलिए बोलता हूं कि सारे फैक्ट्स को छुपाकर वो सिर्फ वही बताते हैं जो उनको बताना चाहिए या जिसको बताने के पैसे मिलते हैं। तो भारत की चोर मीडिया ने सिर्फ यही हंगामा मचाया कि भारत पे का रेवेन्यू 20 गुना हो गया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 में भारत पे का रेवेन्यू था 6 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 21 में हो गया 120 करोड़। तो मीडिया ने इसका हंगामा मचाया, लेकिन भारत की मीडिया ये बताना भूल गई कि वही भारत पे है जिसने
फाइनेंशियल ईयर 21 में लगभग 2961 यानी 2961 यानी मोटा मोटा 3000 करोड़ का लॉस अपनी किताबों में लिया। 3000 करोड़, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब समझने वाली बात यह है कि एक कंपनी जिसका रेवेन्यू मात्र 119 करोड़ हो और जिसका एक साल का लॉस 3000 करोड़ हो, तो दुनिया में आइंस्टाइन का बाप भी उसको यूनिकॉर्न जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन यह अलग बात है कि अगर हम भारत पे के सीईओ की बात माने तो वो आज भी एक यूनिकॉर्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत पे में ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें बैंकिंग लाइसेंस दे दिया, जबकि सब कुछ जानते हुए इन्हें आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दे दिया। अब एक कंपनी जिसकी किताबों में 3000 करोड़ का लॉस हो तो उसको बैंकिंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? मोटी बात यह, क्योंकि इंडिया एक महान कंट्री है। यहां पे आपको अगर एक चपरासी की नौकरी भी चाहिए तो आपको बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए या उससे भी बड़ी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए चपरासी की नौकरी के लिए। लेकिन बैंक लाइसेंस लेने के लिए उस कंपनी का प्रॉफिटेबल होना या नहीं होना, इसमें कोई मैटर नहीं करता। पहले हमने देखा कि कैसे लॉस मेकिंग कंपनीज को एक के बाद एक अप्रूवल मिली, जैसे कि पेटीएम, जैसे कि जोमेटो, जैसे कि नाइकिया, पॉलिसी बाजार, कार ट्रेड और ऐसी कई कंपनीज। सिर्फ पेटीएम में ही इन्वेस्टर्स को 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ, सिर्फ पेटीएम में ही। लेकिन मजाल है भारत की किसी मीडिया संस्थान में जो इस बात को बोल दे कि सिर्फ पेटीएम पे ही इन्वेस्टर को 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और अगर हम पेटीएम, जोमेटो, नाइकिया, पॉलिसी बाजार और कार ट्रेड को जोड़ दें, इन पांचों को, तो टोटल नुकसान जो इन्वेस्टर्स को हुआ है वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये नुकसान अभी इतना ही रहेगा तो आप थोड़े समय वेट करें, आपको पता चल जाएगा। अब बात भरत पे करते हैं दोबारा। तो भरत पे ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21 में 3000 करोड़ के आसपास का लॉस बुक किया और इन्हें आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दे दिया। अब इसमें समझने वाली बात यह है, रजनीश कुमार जो एसबीआई के एक्स चेयरमैन है, उनकी कहानी भरत पे से कैसे लिंक है ये आप खुद गूगल पे देखिएगा। अभी तक आपको आरबीआई की तरफ से या मीडिया की तरफ से ये नहीं बताया गया होगा कि एक लॉस मेकिंग कंपनी को कैसे बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया। बट अभी उस पर और आते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने मनी कंट्रोल से डाउनलोड किया। ग्रोवर एंड हिज वाइफ, अशनीर ग्रोवर की बात करते हैं। अशनीर ग्रोवर एंड हिज वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर exited the company after allegation of misappropriation of funds surfaced following governance audit conducted by Alvarez and Marshall and PwC। ये वही PwC है जो सत्यम माली है और ये वही PwC है जो पेटीएम के ऑडिटर है। पेटीएम की किताबों में एक्यूमुलेटेड डेफिसिट, जिसे कि नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है, वो 12,500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक सुना, नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग 12,500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है? नहीं पता होगा, कभी भी नहीं पता होगा। और अकाउंटिंग वाइज अगर आप हर साल, अगर हम पेटीएम की बात करें तो हर साल पेटीएम लॉस रिपोर्ट कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 के नंबर्स भी आ जाएंगे,
2-3 महीने बाद आ जाएंगे। क्या अभी तक पीडब्ल्यूसी ने इन्वेस्टर को यह बताया कि आपकी किताबों में 12,500 करोड़ का नेगेटिव डेफिसिट है, यानी कि हर साल ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? क्या बताया? नहीं। लेकिन गवर्नेंस ऑडिट करेगा पीडब्ल्यूसी। एक्चुअली हिंदी मीडिया को ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे समझदार लोग बढ़ चुके हैं। नंबर वन, कि हम जो भी बोलेंगे सामने वाला बंदा उस चीज पे ट्रस्ट कर लेगा। दूसरी चीज, दुनिया में किसी आदमी को अकाउंटिंग और फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो हम जिस आदमी को इडियट बनाने की कोशिश करेंगे वो बन जाएगा। अब सुनिए, Grover and his wife Madhuri Jain Grover exited the company after allegation of misappropriation of funds surfaced following a governance audit conducted by Alvarez and Marshall and PwC. Grover exited the company in a late night resignation on 28 फरवरी। भाई, अगर तूने कुछ किया नहीं, अगर तेरी बैकग्राउंड क्लीन है, तूने किसी भी फंड को मिसअप्रोप्रिएट नहीं किया, तो तूने रिजाइन क्यों किया? अगर तूने कोई फंड मिसअप्रोप्रिएट नहीं किया तो रिजाइन क्यों किया? कंपनी में रहो ना। ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं जब लोगों ने कुछ नहीं किया, उन पे फॉल्स एलिगेशंस लगी और वो उस कंपनी में टिके। लेकिन यहां सीन अलग है। ये वही अश्नीर ग्रोवर है जो शार्क इंडिया, जो कि भारत का एक रियलिटी शो है, उसमें लोगों को जज करता है। मतलब एक ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर जो अपनी मेहनत से अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता है, उसको ये आदमी जज करता है। ये अश्नीर ग्रोवर की बैकग्राउंड है। अब सोचो शार्क इंडिया की क्या बैकग्राउंड होगी। शार्क इंडिया में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी खुद की बैकग्राउंड जीरो है, लेकिन वो दूसरे को जज कर रहे हैं। यानी मोटी बात यह है कि एक ड्रग एडिक्ट एक टिटोटलर को जज कर रहा है। तो इंग्लिश में टिटोटलर का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो ना ड्रिंक करता है ना स्मोक करता है। जैसे ना मैं ड्रिंक करता हूं ना मैं स्मोक करता हूं, तो मैं टिटोटलर हूं। तो एक ड्रग एडिक्ट एक टिटोटलर को जज कर रहा है। ये अश्नीर ग्रोवर की बैकग्राउंड है। और इस शार्क इंडिया को भारत की चोर मीडिया ने हाइप दिया हुआ है। सीएनबीसी टीवी 18 पे एक प्रोग्राम आता है, सीएनबीसी यंग टक्स। और आप अगर उस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि भारत की मीडिया किस हद तक बिक चुकी है। वो इन स्टार्टअप्स के हाथों इस हद तक बिक चुकी है कि ये कुछ भी कर रही है। पेटीएम, ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, लेंसकार्ट, दिल्लीवेरी, भरत पे और ऐसे जैसे कितने कलाकार आज तक कभी प्रॉफिट नहीं हुए। बायजूस अपने आप को $18 बिलियन की कंपनी क्लेम करता है। $18 बिलियन, यानी कि अगर आईएनआर टर्म्स में लगाया जाए तो 1,15,000 करोड़ के आसपास बनता फिगर। यानी बायजूस अपने आप को 1,15,000 करोड़ की कंपनी क्लेम करता है। और बायजूस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लो, आइंस्टाइन का बाप भी इनकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो मैं तो चीज क्या हूं। लेकिन क्या आज तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने इस पे कुछ बोला? नहीं बोला। क्या किसी मीडिया संस्थान ने इस बात पे बोला कि एक कंपनी जिसने आज तक कभी प्रॉफिट नहीं कमाया, वो कंपनी अपने आप को $18 बिलियन की वैल्यूएशन पे क्लेम कर दिया? अब मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। आपको जान के खुशी होगी कि भरत पे अगले 2 साल में लिस्ट हो रहा है। मैं नहीं कहना, ये उसका सीईओ बोल रहा है। उसके सीईओ ने पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि हम अगले 2 साल में आईपीओ को प्लानिंग कर रहे हैं। अब ऐसी कंपनी
जिस पे फाइनेंशियल एप्रोप्रिएशन का वो लगा। मेरे पास प्रिंट आउट्स हैं जिसमें इंप्लॉइज ने पब्लिक डोमेन में कहा कि हमें सैलरी नहीं मिली। 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ का जिस कंपनी का घाटा है मात्र 1 साल का, अगर वो बंदा पब्लिक में स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं आईपीओ लिस्ट करने की सोच रहा हूं, तो सोचो वो कितना कॉन्फिडेंट है कि उसको अप्रूवल मिल जाएगा। तभी तो बोल रहे हो कि भाई, तभी तो बोल रहा है ना मैं आईपीओ अप्रूवल करूंगा, वरना क्यों मिलेगा। पूरे का पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है आज के समय में। कहने को हमारे पास बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है। 3,000 करोड़ कमाने वाली कंपनी की मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ पहुंच जाती है। पेटीएम जैसी कंपनी को 2150 पे लिस्टिंग का अप्रूवल मिल जाता है। जोमैटो जैसी कंपनी अपने आप को 8 बिलियन की वैल्यूएशन पे क्लेम करती है। बायजूस अपने आप को 18 बिलियन की वैल्यूएशन पे क्लेम करती है। रजनीश कुमार जो एसबीआई के एक्स चेयरमैन है, उनका भारत पे से क्या लिंक है, ये अपने आप गूगल पे चेक कर लेना। मेरे पास एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है। आज हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जिसमें सारे काले कंचे हैं, सारे काले कंचे हैं। आपको उसमें से एक वाइट कंचा ढूंढना है, यानी कि सारे चोरों में से एक ईमानदार आदमी ढूंढना है। अब मैं आज के फेसबुक कनेक्ट को एंड करूंगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को कितने व्यूज मिलते हैं, कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने डिसलाइक्स मिलते हैं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सब्सक्राइबर्स, व्यूज, लाइक, काउंट्स, ये सब इमटेरियल चीजें हैं। मैं आपको एक बार बता रहा हूं, हम उस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं जहां सिर्फ बर्बादी हमारा वेट कर रही है, सिर्फ बर्बादी। उबर को लिस्ट हुए हुए 3 साल के लगभग होने वाले हैं, लगभग। आप मान लीजिए अभी तक उसका शेयर प्राइस आईपीओ के शेयर प्राइस तक नहीं पहुंचा, और आप सिर्फ वेट कीजिए। क्या किसी रेगुलेटरी संस्थान में दम है जो भारत पे के चेयरमैन या सीईओ को बुला के बोले, भाई तू 3,000 करोड़ का लॉस डिक्लेयर करके पब्लिक में स्टेटमेंट दे रहा है कि तू आईपीओ की प्लानिंग कर रहा है, फिर तो मैं भी कल एक कंपनी खोल लेता हूं, हजारों करोड़ का लॉस दिखा के आईपीओ लेके पब्लिक का पैसे से खेलूंगा। बट इस फेसबुक कनेक्ट के बाद बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लोग फिर भी पैसा लगाएंगे। वरदाना लर्निंग सॉल्यूशंस को अभी अभी आईपीओ का अप्रूवल मिला है। आप एक बार उनकी बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा। दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप। जिसको ये फेसबुक कनेक्ट देख के तकलीफ हुई हो, मेरा नंबर है 9899242978, 9899242978। ये सारे तुर्रम खान, पेटीएम, ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, लेंसकार्ट, बायजूस, और लिस्ट लंबी है। ये सारे तुर्रम खान एक चीज समझ लो कि ट्रेजरी कंसल्टिंग को गोल्डमैन सैक्स भी आज चुनौती नहीं दे सकता। तो तुम तो चीज ही क्या हो। ये जो वैल्यूएशन तुम मार्केट में सबको बोल रहे हो ना, तुम्हारी वैल्यूएशन उसकी 1/4 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है। उतनी तो तुम भूल जाओ, क्योंकि आइंस्टाइन का बाप भी एक लॉस मेकिंग कंपनी को 18 बिलियन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और भारत के इन्वेस्टर जो सो रहे हैं, उनको बहुत जल्दी एक बड़ा झटका लगेगा, वो भी जोर से। याद रखना,
पाप करने वाला गलत नहीं होता, पाप को सपोर्ट करने वाला भी गलत होता है, और हम पाप को सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये कंपनियां आप पे राज करेंगी, सिवाय इधर छोड़ के। तो जिस को तकलीफ हुई हो उसका नंबर, मेरा नंबर 9899242978। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन से वैल्यूएशन प्रिंसिपल के हिसाब से बायजूस 18 बिलियन और भारत पे ये एक यूनिकॉर्न बन गया। दिस इज राहुल मगन, सी यू इन नेक्स्ट फेसबुक कनेक्ट। हैव अ ग्रेट टाइम।